मैं आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर एक पीपीटी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसपे मैं कारगिल विजय दिवस के बारे में बताऊंगा और उस कैसे कैसे प्रतिदिन क्या क्या घटना घटित हुई उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कारगिल दिवस क्या है और ये क्यों इसका नाम कारगिल विजय दिवस पड़ा। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज यू व्हाई द कारगिल दिवस नेम्ड Kargil Diwas, named after the successful Operation Vijay, is celebrated in India on 26th of July. On this date in 1999, India successfully took command at the highest outpost which had been lost to Pakistan. The Kargil War was fought for more than 60 days. It ended on 26th of July and resulted in loss of life on both the sides. The war ended with India regaining control of all the previously held territory, hence re-establishing the status quo ante bellum. Here, quo ante bellum is known for the situation before the war. Kargil Vijay Divas is celebrated on 26 July every year in the honor of Kargil war heroes. This day is celebrated in the Kargil Dras sector and the national capital, New Delhi, where the Prime Minister of India pays homage to the soldiers at Amar Jawan Jyoti at India Gate every year. Now, I would like to show you the chronicle of Kargil War, how it has been started. First, long time ago, after the Indo-Pakistan War, which held in 1971, there had been armed conflicts between two military forces of India and Pakistan. Efforts are made to control the Siachen Glacier by establishing military outposts nearby. During 1990s, due to some escalating tensions and conflicts, separated conflict activities in Pakistan and Kashmir, which took hold on some control, supported some nuclear tests, which created chaos. So later, both countries, Pakistan and India, signed Lahore Declaration in February 1999. But later that year, in 1999, Pakistan military was sending troops to spy over the territory of India. They started Operation Badr to serve the link between Kashmir and Ladakh and cause the Indian military to withdraw their rights of Siachen Glacier. On May 3rd, Pakistani intervention in Kargil reported by local shepherd. On May 5th, Indian Army decided to send the troops to see what was going on Kargil. So they have sent over 5 soldiers with 1 major. So the Indian Army patrol sent up 5 soldiers, and the 5 soldiers were captured and tortured by the Pakistan Army, and they were sentenced to death. Here you can see the picture of the captain which were killed along with 5 others. On May 9, heavy shelling by Pakistan Army damages ammunition dump in Kargil. So the Pakistani Army set up their troops and all the artillery, and they start firing at the outpost of Indian Army. On May 10, infiltration first notice in Dras, Kaksar and Muskos sector. Here in the map you can see all the sectors and the line of the control LOC. Here you can see the Kargil and the Tiger Hill. So all the southern part of that area was captured by Pakistan, and the Pakistan Army were established there. On May 10, mid-May, so basically it was between 10 May to 15 May, Indian armies moves in troops from Kashmir Valley to Kargil sector. The Indian army were posted in the Kashmir Valley. So they were transferred from Kashmir Valley to the Kargil sector because of the infiltration of the Pakistani army. On May 26, our Indian armed forces joined in the Kargil war. They launches airstrikes against infiltration over the Pakistan territory army. On May 27, 2 Indian Air Force aircraft, one was named for MiG-21 and MiG-27. They were shot down by the Anzar Mk-11 of Pakistan Army Air Defense Corps. So basically, on mid of the May, Indian Air Force joined to infiltrate all the activities which were concluded by the Pakistan Army.
So they have sent the two aircrafts, which were MiG-21 and MiG-27. They were shot by the Pakistani Army Air Defense Corps. On May 28, Indian Armed Force Mi-17, that was a fighter jet aircraft, shot down by Pakistan, where the 4 air crew of Indian Armed Forces dead, sentenced to be dead. Here you can see the area of operation for the 1999 Kargil War. So you can easily see a gray line just before the black line. Here the Indian military forces were at the Kashmir, so they moved from Kashmir to Kargil. You can see the black the line along with the line of control. So, next slide. On June 21, Pakistan set up the attacks on National Highway 1. They set up attacks and shells National Highway 1. Here you can see the map of National Highway 1. On June 5, Indian Army releases document recovered from 3 Pakistani soldiers indicating Pakistani movement. So basically what happened that on June 5, Indian Army put 3 Pakistani soldiers into barracks, and they concluded a partial recovery of several documents which were indicating the war functions over Kargil. On June 6, Indian Army launches major offensive in Kargil. So now Indian Army set up their artillery, their weapons, and their outposts near the Kargil area to launch major offensive programs against the infiltration caused by the Pakistani armies. On June 9, Indian Army recaptures 2 key positions in Batalik sector. So basically, it was the Battle of Point 4875. Point 4875, located in Mashkow Valley, dominated National Highway 1 from Dras to Matyan. So basically, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नेशनल हाईवे उन्होंने प्लान किया था टेररिस्ट ने अटैक करने के लिए, होता क्या वहां पे 2 बेसिकली पॉइंट्स थे जो इंडियन आर्मी में रिकैप्चर कर लिया था, जो पहले पाकिस्तानी ने कैप्चर किया था. द ट्रूप्स ऑफ इंडियन आर्मी fought valiantly to recapture the strategically important peak. On June 11, Indian releases intercepts of conversation between Pakistani Army Chief General Parvez Musharraf. उस टाइम जब कारगिल वॉर हो रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल थे परवेज मुशर्रफ. So basically, Indian releases intercept of conversation between Pakistani Army Chief General Parvez Musharraf while on a visit to China and Chief of General Staff Lieutenant General Aziz Khan in Rawalpindi as proof of Pakistani Army involvement. हुआ क्या था कि जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, एक कन्वर्सेशन कर रहे थे जब वो चाइना गए थे, और कन्वर्सेशन किसकी थी, परवेज मुशर्रफ की और मोहम्मद अजीज खान की. तो उन्होंने ये उनका कन्वर्सेशन एक डायरेक्टली प्रूफ था कि पाकिस्तानी आर्मी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है उस नेशनल हाईवे 1 के अटैक पर. On June 13, Indian Army secures the Dras sector of Kargil region. On June 15, so basically मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम जब कारगिल वॉर हो रहा था, तो उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने किया क्या कि द यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन forced पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ to pull out from कारगिल. बेसिकली बिल क्लिंटन ने एक टेलीफोनिक कॉल किया उनको टेलीफोन पे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को समझाया कि अगर आप कारगिल से नहीं हटे तो आपके साथ बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं. June 29, Pakistani Army's food and weapon supply line was cut by their own prime minister, so they moved back and Indian Army forwards towards Tiger Hill. तो बेसिकली हुआ क्या कि द्रास सेक्टर पे जब इंडियन आर्मी में द्रास सेक्टर कैप्चर नहीं किया था, हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान में वहां पर रह रही थी, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की टेरिटरी उनको फूड और वेपन सप्लाई करती थी. तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही जो सप्लाई लाइन थी उसको कट कर दिया, तो उसकी वजह से खाना और वेपन ना होने की वजह से वो वापस पीछे आ गए, और उससे क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को एक बढ़त मिल गई, उसकी वजह से वो टाइगर हिल तक जा सके.
On June 2nd, Indian Army launches three-pronged attack in Kargil. On July 4th, Indian Army recaptures Tiger Hill after an 11-hour battle. So basically हुआ क्या था कि 11 आवर्स का एक बैटल हुआ था पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच टाइगर हिल पे, क्योंकि अब द्रास सेक्टर तो इंडियन आर्मी के कब्जे पे आ चुका था और कुछ पाकिस्तानी फोर्सेस भी मूव कर चुकी थी। तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस अब टाइगर हिल पे थी, वो सबसे बड़ा अभी तक का बैटल चला, 11 आवर का बैटल चला, जिसमें इंडियन आर्मी में जीत पाई और टाइगर हिल को रिकैप्चर कर लिया। On July 5th, Indian Army takes control of Dras. Pakistani PM Nawaz Sharif announces Pakistani Army's withdrawal from Kargil following his meeting with Clinton. तो बेसिकली होता क्या है, जुलाई 5 को पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की एक अनाउंसमेंट आती है कि पाकिस्तानी आर्मी कारगिल से विड्रॉ कर रही है आफ्टर जब उनकी मुलाकात क्लिंटन से हुई। तो बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कारगिल इंडिया को एक स्तर आगे लेके जाने का, जिससे वो टाइगर हिल को कैप्चर कर पाई। On July 7, India recaptures Jubair Heights in Patlik. On July 11, Pakistani begins pull out. So India captures key peaks in Batalik. So basically Batalik एक सेक्टर था जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कारगिल जो टेरेन्स थे, जो माउंटेन्स थे, वो था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जुलाई 10 पे जब उन्होंने बैतालिक का एक प्रायोर सेक्टर कैप्चर कर लिया था, जो उसके की पॉइंट्स थे वो अभी तक कैप्चर नहीं किए गए थे, तो पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट गई थी, जिसकी वजह से जो की पीक्स थे बैतालिक के वो भी इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। ऑन जुलाई 14, our honorable Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee declares Operation Vijay a success. Government sets condition for talks with Pakistan. अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को, जो भारतीय सेना द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसको एक सक्सेस बता दिया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि वो पाकिस्तान से कुछ कंडीशन पर बात कर सकते हैं। On July 26, Kargil conflict officially comes to an end. Indian Army announces complete eviction of Pakistani intruders. तो बेसिकली ऑन 26, जो कि आज है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान ने किया था, उसको एक एंड मिल चुका होता है और ऑपरेशन विजय एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ फोटोज हैं यहाँ ऑपरेशन विजय की, जो वहाँ पे कुछ पीछे आपके कारगिल सेक्टर दिख रहा है उस फोटोज में। तो ये जो कारगिल वॉर के दौरान जिन्होंने अपनी शहादत दी थी देश के लिए, ये उनकी एक लिस्ट है। बेसिकली 600 से ज्यादा आर्म रिप्रेजेंटेटिव इंडियन आर्मी के और ज्यादा की डेथ हुई थी, और अभी कोई एक एस्टिमेट वैल्यू नहीं है कि इतने लोग ही इसमें मारे गए थे। सो ये एक फोटो है आफ्टर कैप्चरिंग द धार रीजन, धार सेक्टर ऑफ कारगिल। नाउ हियर इज अ मैसेज, we salute to those who sacrifice their future and give us the present. जय हिंद, जय भारत। Thank you, Cadet. Sir, may I?